Welcome to WeLearn. This is second part of session 3 of C#. In this session, topics covered are constructor, destructor, methods and constructor overloading, value and reference types. Now what is a constructor? Instance constructors are special methods that are called when a class or struct is initiated. That means जैसे ही आप एक object create करते हैं, automatically constructor call हो जाता है. It perform certain custom initialization. It can be overloaded just like your method. If a class doesn't define any constructor, an implicit parameterless constructor is created. अगर आपने अपने प्रोग्राम में कोई constructor create भी नहीं किया है, automatically एक constructor create हो जाता है जिसे हम default constructor कहते हैं, which doesn't contain any parameter. It cannot be contain a parameter or it can be. All fields initialize to 0. If there is a default constructor or आपने कोई constructor create नहीं किया तो automatically जो constructor build होता है उसके अंदर सारी fields की initial value 0 होती है. Finalize method is used to perform a cleanup operation on an unmanaged resources held by the current object before the current object is destroyed. आपके कुछ resources होते हैं जब हम object create करते हैं तो वो उन resources को utilize करते हैं. फाइनलाइज मेथड का वर्क होता है सबसे पहले उन रिसोर्सेज को फ्री करना, उसके बाद आपके करंट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना. द मेथड इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर इज एक्सेसिबल ओनली थ्रू इट्स क्लास और थ्रू अ डिराइव्ड क्लास. Finalize operation has a limitation, that is the exact time when the finalizer execute during garbage collection is undefined. आपको टाइम नहीं पता है किस टाइम पे गार्बेज कलेक्शन परफॉर्म करने वाला है आपका फाइनलाइजर. मोर ओवर रिसोर्सेज आर नॉट गारंटीड टू बी रिलीज्ड एट एनी स्पेसिफिक टाइम अनलेस कॉलिंग अ क्लोज फंक्शन और अ डिस्पोज मेथड. सो वी यूज destructor for that purpose. A destructor is a method that is called before an instance is garbage collected, used to clean up any resources held by the instance, do bookkeeping, etc. Only classes, not structure, can have a data structure, can have a destructor. क्लासेस में destructor होते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर destructors अवेलेबल नहीं होते. destructed method तब कॉल होता है जब आपका इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट का काम ख़त्म हो जाता है. दैट मीन्स आपको उसे गार्बेज कलेक्शन को देना होता है. डिस्ट्रक्टर के अंदर और कंस्ट्रक्टर के अंदर क्लास नेम सेम होता है. दैट मीन्स जो आपकी क्लास का नाम होगा वही आपके डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर का नेम होगा. Only difference is that if you are writing a destructor, it is followed by a tilde sign like this. Here is a class named FOO and in this you have a destructor whose message is destroyed. This is an operator which is used to specify that जिस ऑब्जेक्ट ने इसे कॉल किया है ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा. दैट इज इफ ऑब्जेक्ट 1 OB1 of this particular class called the destructor, then only here is destroyed OB1. Overloaded methods. A type may overload methods, that is provide a multiple methods with the same name. Each must have a unique signature or signature is depend on arguments only. The return value is ignored. Like in this example, the method name is same, print, but the argument which it accepts is of different data types. Like one is of int, another is string, another is char, and the rest is float. If the parameters are same and types are also same, then return type varies. For one it is void and another is int. Void return type specifies that the particular function doesn't return any value, and if we are using int in front of our function name, that means this function is returning something. जैसे ही आप int print float f लिखेंगे उस पर्टिकुलर टाइम में आपको एक एरर मैसेज आएगा, दैट इज डुप्लीकेट सिग्नेचर. डुप्लीकेट सिग्नेचर मीन्स दिस इज कॉल्ड एज सिग्नेचर, function name and the parameter. Here the parameter is same, data type of parameter is same, and the function name is same, so it will give an error. You can also overload your constructor. Constructor overloading in C# is a type of static polymorphism. Using constructor overloading, any number of constructor can be defined of the same class.
but the difference is their types of parameters and different number of parameters. Here is a class named mySample class. In this we have three constructor. One is which doesn't have any parameter, another have one parameter, and the third one has two parameters. Now how do we call this constructor? क्योंकि constructor जब जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाते हैं. जब आप इन्हें कॉल करने लगेंगे तो डिपेंड करेगा कि आपने ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया है उस टाइम पे पैरामीटर्स दिए हैं या नहीं. लाइक यहाँ पे जो आपने ओबीजे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके अंदर आपने यहाँ क्लास में कोई पैरामीटर प्रोवाइडेड नहीं किया है. दैट मीन्स ये आपका फर्स्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं था. जब आप पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे तो वो सेकंड कॉल करेगा जिसके अंदर आपका एक पैरामीटर है, क्योंकि थर्ड कंस्ट्रक्टर में आपके दो पैरामीटर्स हैं. नाउ व्हाट इज अ वैल्यू टाइप? Variables that are based on value types directly contain value. Assigning one value type variable to another copies the contained value. That is, अगर simply हम एक value जो हमने use करी है, हमने एक variable के अंदर वो particular value डाल दिया, like v is equal to 5. This is your value type. All value types are derived implicitly from a system dot value type. Value type is a class which is contained in a namespace named system. Value type can't contain the null value. Each value type has an implicit default constructor which initializes the default value of that type. Another is your reference type. Variables of reference types store references to the actual data. Reference types store the address of their data, which we call as pointers. The actual data that the address refers to is stored in an area of memory known as heap. रेफरेंस टाइप के अंदर हम एक एड्रेस पास करते हैं इंस्टेड ऑफ डाटा, जबकि वैल्यू टाइप में हम अपना डाटा पास करते थे और यहाँ पे हम एक रेफरेंस एड्रेस और रेफरेंस पास करते हैं पॉइंटर्स के थ्रू. एज रेफरेंस टाइप्स रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ द डाटा रादर देन डाटा इटसेल्फ, देन असाइनिंग अ रेफरेंस वेरिएबल टू अनदर डजंट कॉपी द डाटा, इट जस्ट ओनली कॉपीज द रेफरेंस. वी हैव टू पैरामीटर्स, out, keywords out and ref. The out can be used to return the value in the same variable passed as the parameter of the method. Any change made to the parameter will be reflected in the variable. out parameter हम तब यूज़ करेंगे जब हमें same variable जो हमें output में मिल रहा है हम उसी की value को alter करके again use में ला रहे हैं. On another hand, ref keyword on the method parameter causes a method to refer to the same variable that was passed as an input parameter from the same method. If we make any changes to the variable, they will reflected in the variable. This one out example. In this there is a class named math class, a static function test out. Here you pass two variables whose data type is out. In this there are two variables ival1, ival2, both are of type out int, and then is return 0. Return 0 means, as you can see here, return type is int. That means my function will return some an integer value, so I have to write return 0. This is our main function. Here two variables are declared. These are options, you can or you cannot. console.writeLine, राइट लाइन फंक्शन जो हमारा प्रिंट कर रहा था उसमें हमने अगेन एक फंक्शन कॉल किया है टेस्ट आउट, जिसके अंदर पैरामीटर प्रोवाइड करे हैं आउट आई एंड आउट जे, एंड देन विल प्रिंट बोथ वैल्यू. हियर द आउटपुट विल कम एज 10 and 20. As this function calls, out I refer to this ival1 and out j refers to val2. This one is for ref example. Class is my class and the function is ref test. Here you can see keyword uses ref. One variable or one parameter is passed in this function ref int ival1, and here we'll increment ival1 value by 2. In main function declared a variable I, initialize it with a value 3 and then call the ref test function. As soon as I call this function, the console.write
line I gives me the output as 5, because I is 3, pass to this value, I value becomes 3 and increment in this of 2 by 2. So result is 5. Now we'll do a practical for constructor and destructor. Class is program. In this, I'll just create a constructor program. It will print a message system dot console dot write line messages constructor invoked. Terminate is close the block and create a destructor. And here the message will be destructor invoked. And in the main function, write a message main begins. Then create an object of program class. After that, starts a block, print a message inner block. After that, create another object of program class named P1. And print a message inner block ends. Close the inner block and print a message main ends. Write system dot console dot read. Save your program. Compile the program and then run this. You can see main begins, constructor invoked, then inner block is called. अगेन जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ अगेन कंस्ट्रक्टर को इन्वॉक किया, उसके बाद जब इनर ब्लॉक एंड हुआ मेन एंड हुआ देन ओनली द डिस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड. Now one example for ref. Here we use ref keyword.
make a function named void add1. In this, declare a variable of ref int type where starts the block. In this, write var plus plus and close your function. And in main, creates an object of program class declare a variable n and initialize with the value 6. Call add1 function using object p and pass a parameter of reference type ref n. Terminate this. Print the value of n. Semicolon. Close your main function as well as class. Save the program. Compile the program and then run. You can see the value becomes 7. We'll just pass 6 ref n. This time the address of n variable is passed to add1 and that particular variable passes to var variable. Now var become 6 and increment in 6 is 7, which revert back your answer is 7. And if the same you can do by value type, but just simply delete ref. Where you call the function or declare a function. Save the program and run this. The output will be same. Now based on this session, you can perform this exercise. First question is explain method overloading with example. First of all आपको बताना है method overloading होती क्या है और उसके बाद आपको एक example देना है. Secondly, define static members of a class. Static members of a class आपको define करना है. आप एक class create कीजिए, उसमें एक static keyword use करके static member function declare करेंगे. Then purposely उसे define करेंगे कि static members का क्या use है आपकी class में. Thank you. Happy learning. We learning.